let us talk about the types of diseases. So based on the means of spread of a disease कि कोई disease कैसे spread कर रहा है, we can classify them into different categories. The first are the airborne diseases. So in airborne diseases, the germs basically enters into our body via air when we inhale into the polluted air. So at that time जो air में germs present होते हैं वो हमारी body में enter कर जाते हैं, and then this bacteria or virus that has been entered into our body causes infections like common cold or TB. Talking about the foodborne diseases. Foodborne diseases तब होती हैं when we consume contaminated food. जब हमने infected food that has been infected by microorganisms, जब हम ये food consume कर लेते हैं तो जो microorganisms है वो हमारी body में enter कर जाते हैं and they can cause food poisoning and typhoid. So the next category is waterborne diseases. Waterborne diseases basically occurs when we drink unfit water. जब वो पानी जो पीने के लिए ठीक नहीं है, that is not potable water, and वो water जो है वो clean नहीं है, वो infected water है, उसमें germs present है, and when we consume that water, so at that time diseases like cholera and amoebiasis that are termed as waterborne diseases can infect us. Now the next category is lifestyle diseases. So lifestyle diseases जो होती हैं students, they are basically not caused by any microorganism. This is because of our unhealthy lifestyle practices. For example, if you are not taking enough walk and if you are consuming too much of the fast food, junk food and not doing proper exercise and experiencing stress, तो हमारी जो lifestyle problems होती हैं उसकी वजह से जो diseases होती हैं they are termed as lifestyle diseases. And the examples include heart diseases and diabetes. Further, let us talk about vector-borne diseases. So vectors, what are vectors? Let us first understand the term vectors. Vectors जो होते हैं they are basically the carrier organisms जो पैथोजन को कैरी करते हैं. वेक्टर्स जो हैं वो खुद इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट, एक कैरियर होते हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं एंड इस तरीके से वो किसी भी चीज को इन्फेक्टेड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द हाउस फ्लाई, दैट इज अ वेक्टर जिसकी बॉडी पे पैथोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड जब ये हाउस फ्लाई जो है वो फूड के ऊपर जाके बैठती है तो वो पैथोजेंस वो फूड पे ट्रांसफर कर देती है. तो हाउस फ्लाई जो है वो खुद जो है कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रही है, इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ वेक्टर, वो कैरियर है बीच में. सो जो डिजीजेस ऐसे होती हैं दे आर नोन एज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस and the examples are dengue and malaria. Now the last are the sexually transmitted diseases that are basically caused due to the sexual contacts from one person to another, and the examples includes AIDS and syphilis, gonorrhea and many more.